Hello everyone, myself Navneet. Welcome back to my YouTube channel. Firstly, subscribe my channel if you want to get the desirable band score in your ads. Today we will discuss about another task 2 that is more challengeable for the candidates, and it has been attempted by many candidates in the exam of IELTS, in the IDP and British also. So today we will discuss about the space exploration. Different type of essays can be seen in the examination, like as both view, advantages, disadvantages, agree, disagree. The space exploration ਦੇ बहुत सारे essay होते हैं, but ਜਿਹੜੇ points मैं discuss करूँगी वो commonly points ने, and you can write every type of essay that can be seen in the examination related to the space exploration. So today our essay is about. Some people think that space exploration is a waste of resource, while others think it is essential for mankind to explore the universe in which live. Discuss the both view and give your opinion. कुछ people सोचते हैं कि ये wastage of resources है, like money दी wastage है, fuel दी wastage है, अगर ਆਪਾਂ space ਨੂੰ explore ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कुछ भी efforts करते हैं. पर दूसरी कहती है कि ये बहुत important है, मेन एक मतलब अपनी बहुत सारियां लोड़ां ਨੂੰ complete करता है, essential है एक human वास्ते स्पेस ਨੂੰ एक्सप्लोर करना. किद्दां किद्दां एसेंशियल है एंड किद्दां किद्दां ਇਹਦਾ मतलब ड्रॉबैक्स हैं, वो सारा ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे. Let's go with some vocabulary portions of the word and some synonym portions. First of all ਜਿਹੜਾ point है वो अपने ਕੋਲੇ ਕੀ है, स्पेस एक्सप्लोरेशन. स्पेस एक्सप्लोरेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ यूज करना है स्पेस रिसर्च, स्पेस प्रोग्राम, एक्सप्लोरिंग आउटर स्पेस. सो आउटर स्पेस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एक्सप्लोर करना है उस टाइम ਤੇ ਤੁਸੀਂ these type of synonyms you can use, because space exploration ਬਾਰ-ਬਾਰ यूज नहीं करना चाहिए. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ. ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, in order to find any type of research, so you should go with the space exploration. सो ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ स्पेस रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी रिसर्च है, सैटेलाइट ਨੂੰ एक्सप्लोर करना है, सो वो सारा पोर्शन आ जाता स्पेस एक्सप्लोरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ. ऐसे डिस्कस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ. ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੋਥ ਵਿਊ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ. ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਪਲ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਬੈਕਸ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ. then अगर ਤੁਹਾਨੂੰ agree or disagree ਦੇ points ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚ partially agree ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ benefits ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ points ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ drawbacks ਦੇ ਸਾਰੇ points ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ it's up to you, like where you have a multiple points then you should go with it. so ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ different type ਦੇ ਐਸੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ execute ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. almost near about 50 70 100 ਦੇ near about ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ complete ਹੋ ਜਾਣਗੇ. space exploration ਦਾ main meaning ਕੀ ਹੈ, and you can also explore your knowledge regarding the space exploration, because it is also a hot topic which can be seen in the intro part of the speaking, because examiner usually ask the question related to the space exploration and space कि तुसी outer space ਦੇ related कोई भी question है ਜਿਹੜੇ examiner almost करते हैं, so you can boost your knowledge with the help of this. So firstly we should go with some of the points. Drawbacks ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ point ਲਿਖੇ ਹਨ. Huge amount is required for the building spacecraft. spacecraft ਦੇ ਨੂੰ मतलब ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, build ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ बहुत ज्यादा मनी है जी स्पेंड होती है. लॉन्च द स्पेसक्राफ्ट हैड फेल्ड. जिवें सपोज करो स्पेसक्राफ्ट ਆਪਾਂ लॉन्च करते हैं वो फेल हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈਗਾ. ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ we should go with the disadvantages. So advantages ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, finding another habitable places in the universe for the human. ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ another ਜਿਹੜੇ planet ਹੈ ਉਹ find out ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ. बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने थोड़ा थोड़ा ये भी मतलब लॉन्च किया जा चुका उन्होंने दोबारा कि मतलब अनदर जेडे प्लैनेट है लाइक स्पेस के जेडे दूसरे मार्स, जुपिटर, ठीक है, यूरेनस, नैपचून, ये सारे जेडे प्लैनेट्स हैं, इन्हां दे विचों जेड़ा मार्स प्लैनेट है वो एक ऐसा जिहा प्लैनेट है जिथे लाइफ पॉसिबल है, सेम एज अर्थ. तो उस अकॉर्डिंग वो चीज नूं हैबिटेबल प्लेस in the universe for the human वास्ते same place find out की जा रही है. Limited natural resources, exploitation of natural resources.
मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिट हो गई कादे करके एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करके ਜਿਹੜੀਆਂ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट वी कैन सी जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਏਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਰਥ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਫੀਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬਟ ਟੁਡੇ ठीक है इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड ऑन द अपर लेवल ऑफ द अर्थ क्योंकि बहुत डाउन लेवल बहुत डाउन लेयर है जेड़ा उस ते जेड़ा वाटर है वो जा चुका है दैट इज आल्सो नोन एज अ नेचुरल रिसोर्सेज उस तो बाद है अल्टरनेटिव प्लेसेस अल्टरनेटिव प्लेस वही होगी जिथे आप अर्थ ते रहने अर्थ की बजाय आप किथे रह सकते हैं नेक्स्ट वन इज अ सैटेलाइट है जी लॉन्च की गई है वो अपन किदे लिए बेनिफिट देती है क्लाइमेट चेंजेस बारे दसती है हेल्प द फंक्शनिंग of broadcasting stations and navigational system broadcasting station and navigational system मतलब की आ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ weather ਦੇ related ਕੋਈ ਵੀ information ਲੈਣੇ ਆ like the rain when the rain will come when मतलब the climate condition will change hotness coldness temperature ਇਹਦੇ related ਕੋਈ भी information ਲੈਂਦੀ ਆ it is just possible just because of satellite and internet की जी range frequencies हैं these are also just possible because of the satellite so navigation portion की हुंदा when we go one place to another place at that time we can know about the destination wherever we want whenever we want and whatever we want ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ find out ਕਰਨਾ it's possible to find out our destination just because of navigational system नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ सेंडिंग द पीपल ऑन मार्स मार्स ते जेडे पीपल है मतलब उन्होंने सेंड करने वास्ते पॉसिबिलिटी लाई जा रही है सो इफ इट विल गिव राइट आउटकम जे इन्हें सही आउटकम देती देन इट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस दे विच दुनिया की सब तो इतिहासिक अचीवमेंट होगी जे ये चीज अपन मिल जाती है So इस तरीके दे नाल you should go with some positive point and negative point. So we should go then after that move to the topic and we should go with the both views and explain the both views briefly questions. So सब तो पहला एक जर्नल लाइन बना लो undeniably high popularity has been gained जहाँ फिर तुसी कहोगे a numerous type of inventions can be seen just because of the blessing of the space outer space exploring of outer space exploration of outer space exploring outer space programs तुसी लिख सकते हो launches लिख सकते हो researches लिख सकते हो कोई भी पॉइंट तुसी पा सकते then go with the both view you should estimate and you should write the both view in your introduction so that examiner can find that you are going to write about the both view essay क्योंकि some of the candidates go with the more and more journal lines they do not use the paraphrasing regarding making your introduction that is totally wrong and in this way examiner can deduct your marks so सब तो पहला अपन although ते but वाले concept दे विच both view नु elaborate करना है although it is reckoned by some people it is a wastage of funding to spend for exploring the space but other criticize it and consider that the importance of space research cannot be denied जहाँ तुसी इत्थे वोट पा सकते हो other criticize it and consider that necessity is a mother of invention so a lot of requirements and so the importance of science programs cannot be denied फिर तो रिपीट कर दें although it is reckoned by some people it is a wastage of funding to spend on the space research but other criticize it and consider that it is more important for the human just for getting the great benefits of next अगर तुसी एक thesis line पाना चाहते हो journal line कटना चाहते हो तो उधे विच तुसी बहुत expensive part पा सकते हो तुसी लिख सकते हो कि this essay will discuss about the both views in upcoming paragraphs या फिर तुसी लिख सकते हो कि the both views are being discussed in the following paragraph that is more formal and more imperative
सो सब तो पहला आपां फर्स्ट पोर्शन दे नाल चलांगे जिहदे विच उन्हां ने कहा कि वेस्टेज ऑफ मनी है। तां तुसीं किदां मतलब डिस्कस करोगे? हाईलाइटिंग द फर्स्ट एस्पेक्ट, पीपल अपोज द कंसेप्ट ऑफ giving the favor the concept of exploring the space just for the research and new inventions is a wastage of money, as they think that it is not beneficial for the developing as well as underdeveloping countries, because a point चकोगे तुसी huge money is required for building of the spacecraft, but sometime these type of launches goes failed and million and trillion rupees which has been spent in order to explore the space where goes in the wastage. So in the developing or underdeveloping nations, the poverty can be seen, that is totally risky and detrimental for the economy of the nations, because in the developing or underdeveloping nations the social issues can be seen, स्पैशली केड़े सोशल इशूज अपने को पॉवर्टी, सब तो पहला हाई इलैटरेसी रेट की हुंदा, अनपढ़ता दी रेट बहुत ज्यादा है। हाई इलैटरेसी रेट, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन, सारे सोशल इवल्स लिख सकते हो तुसी। that made the life of the people more complicated and most of the people are living in the miserable conditions. So if the money is spent by these nations first on the development of the nations, then definitely the nation can flourish by leaps and bounds on the path of progress. So is shifting to the another aspect, another school of thought oppose the concept that it is a wastage of money to spend and explore the science and scientific researches, because as they think that science research has proved more beneficial. First and the foremost is satellite, which has been launched by the scientists in the space, that are more beneficial for the navigational system as well as the weather forecasting stations, because we can know about, the people are able to know about the destinations wherever they want to go, and whatever, whenever they want to go, they can reach their destination just because of the navigations. So इस तरीके दे नाल आपां इहनूं डिस्कस करांगे। It cannot be ignored to say that ये कहना गलत नहीं होगा कि in the present scenario many scientists has told that they will find the alternative planet, and the exploration is being performed by them in order to find out the alternative planet on the space, so that the life of the people and the human life of the human can become more convenient and comfortable also, because as we see that natural resources are limited on the earth due to having a high exploitation of natural resources. So if the planet is explored by the scientist, if the new planet will be invented by the scientist, then it will be the highest and greatest achievement in the history of the human in the universe. हिस्टरी दे विच बहुत वड्डी अचीवमेंट होगी जे इदां हुंदा। बहुत सारे जिहड़े साइंटिस्ट हैं वो की कर रहे हैं, बहुत सारियां रिसर्चेस कर रहे हैं in order to find out, and they have found that Mars is one of the planet where it may be a possible, but it has not proved, but they are performing and trying in order to find it properly fruitful so that good outcomes can be taken. So इस तरीके दे नाल सीधा second views. Then in the next portion we should go with the conclusion. After pondering a great deal of thought, I came to the conclusion. कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अपना ओपिनियन नेक्स्ट पैराग्राफ दे विच लिखो, भी मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, 2 पैराग्राफ बोथ व्यू दे हो गए, नेक्स्ट जेड़ा 4th पैराग्राफ है राजे वो कई बच्चे कहते हैं कि अपना ओपिनियन उच लिखना चाहिए, बट नोट you should go with the conclusion where you should give your opinion, because in this way your essay can become more imperative and word length भी बढ़िया जाओगी and your conclusion भी बहुत अच्छा जाएगा. So after pondering a great deal of thought, I came to the conclusion
according to my perception, it has proved that the space exploration is beneficial for the human, and the inventions which has been invented cannot be denied. But especially the developing or fell under the developing countries, the first preference had better be given by them towards mitigating the social evils in which has made the life of the people more worse. बहुत ज्यादा बेकार लाइफ जी बना चुके हैं, पहला उन्होंने फोकस करना चाहिए. दे शुड पे आउट द मनी, ठीक है, फॉर फिनिशिंग दीज टाइप ऑफ इवल्स, सो दैट द लाइफ ऑफ द पीपल कैन बिकम मोर कंफर्टेबल. On the other hand, the global contribution out to be done whole the globe and especially by the richest countries, so that the space exploration can be done for the betterment of human mankind. So in this way, for the betterment of mankind, so in this way, this was one of the task 2 which I have explained. So I really want to boost the score of the candidates who want to get the desirable band score in the IELTS. So firstly, follow my channel and follow my all videos, because all my videos are more beneficial for the candidates. Thank you so much.